Hello everyone. Today we will do descriptive paragraph. A descriptive paragraph is therefore a paragraph that vividly describes a person, place, object, idea, or feeling as viewed or experienced by the writer. Writing requires students to make detailed observations about the topic, prepare some notes on their observations, and then organize that information into a clearly worded and connected paragraph for a specific purpose. An effective paragraph helps the reader experience what the author is describing. The better the description is, the clearer the image it forms. Now, describing people, we have three topics in this: describing people, describing place, or describing objects. First, we will discuss about describing people. Height, tall. This is the vocabulary for describing people. If we have to talk about the height of the person, then we should use tall, tallish, short, shortish, medium. Height, about what centimeter tall? About 160 centimeter tall. Build, frail, stocky, slim, thin, plump, fat, skinny, well built, medium built, etc. If we want to talk about age of that person, we would use young, elderly, middle aged, teenager, in 20s, 30s, or 40s. Then face. Face is round, oval, square, with scars, wrinkles, pimples, suntanned, or pale. Eyes, big, round, blue eyes, large, small, bright, narrow, shining. Hair, bold, straight, curly, spiky, wavy, receding. And clothes, casual, scruffy, shabby, smart, tidy, and messy. Now some character traits. If if we want to share some character traits or personality traits, then we should use this type of vocabulary in our topic: careful, hardworking, worried, cheerful, broad minded, active, curious, secretive, aggressive, tough, careless, practical, sensible, independent, strong minded, stupid, dull, boring, imaginative, ambitious, crafty, sensitive, gentle, generous, loyal, self controlled, moody, trusting, modest, tolerant, friendly, energetic, confident, selfish, shy, stubborn, reliable, clumsy, or intelligent. Now, if we want to discuss about objects, then what should be? We discuss the name of that object. After that, its shape, means what is the shape of that object? It is square, rectangular, oval, spherical, etc. Then its color: pink, blue, yellow, black, etc. Its content or its parts. Then its location, where it is generally kept. Its utility or its uses. और योर रिमार्क्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वो उसकी शेप कैसी है, उसके कलर क्या हैं, उसका कंटेंट, उसके पार्ट्स, उसकी लोकेशन, कि वो कहाँ रखा गया है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं. आफ्टर दैट, फोर प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस प्लेस के बारे में बताएंगे. नेम क्या है उस प्लेस का, इट्स लोकेशन, इट्स साइज़, एरिया, डिटेल्स. जैसे अब हम मान लो घर के ही बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिटेल्स ऑफ डोर्स, विंडोज़ एंड अलमीराज एट्सेट्रा, विद डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एट्सेट्रा. देन इट्स फ्लोरिंग, कलर ऑफ फ्लोरिंग, और पेंट ऑफ द वॉल्स. Then furniture, paintings, curtains, etc. एयर, लाइट, वेंटिलेशन और कैपेसिटी, कि किस तरह की कैपेसिटी है. अगर हम अपने लिविंग रूम या ड्राइंग रूम किसी के भी बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्राइब करना होगा. आफ्टर दैट,
अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने की ज़रूरत होती है. मेक अ रफ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रेलिवेंट पॉइंट्स. देन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़. अरेंज योर आइडियाज़ लॉजिकली. Do not include any irrelevant material. Use expressions carefully, maintaining fluency and accuracy. Stick to the word limit. मीन्स जितनी वर्ड लिमिट आपको कही गई है 60 to 80 वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए तो उतना ही होगा. रिवाइज योर फेयर ड्राफ्ट. देन मेक करेक्शंस इफ एनी. Yes, complete this.